Good morning. Hi everyone. Today we are going to learn Jal Neti. It's a cleansing process or practice among the Shatkarmas or six purificatory practices. It is a very simple practice. You just need a Neti lota like this, salt, lukewarm water, and a hand towel to wipe your nose. Before practicing, let us know some benefits of Jal Neti. The very first one, it cleanses your nostrils, all the pollutants, allergies, not only the nasal passage but the sinuses also. So, once this whole passage, the whole nasal passage is cleaned, the breath flows without any obstruction. Very good for the patients who are suffering from sinusitis, airborne allergies, and diseases related to your respiratory system also, like asthma and pneumonia, bronchitis, pulmonary tuberculosis also. Seems very simple, but the benefits are, means you can't compare the benefits. Okay, so one more thing, for practicing, initially if possible try to do under guidance. You just need lukewarm water, lukewarm गुनगुना पानी. उस पानी को आप अपनी इस स्किन पे चेक कर सकते हो. अगर वो बर्दाश्त करने लायक है then it is okay. Then water and salt का ratio, that is per half liter 1 teaspoon, per half liter 1 teaspoon of salt. अगर आपके पास मेजरिंग स्पून नहीं है देन कैसे करेंगे? सॉल्ट ऐड कीजिए, उसे टेस्ट कीजिए. उसका टेस्ट आपके स्वेट या टीयर की तरह होना चाहिए. सॉल्ट का प्रोपोर्शन अगर बहुत ज़्यादा हो गया तो नेज़ल पैसेज में इरिटेशन होगी. अगर प्रोपोर्शन कम है तब भी इरिटेशन होगी. तो इस चीज़ का स्पेशली ध्यान रखना है कि सॉल्ट का प्रोपोर्शन सही हो, पानी का टेम्परेचर सही हो. और पानी अगर एक नॉस्ट्रिल से निकल के दूसरी नॉस्ट्रिल से बाहर नहीं आ रहा है, इट मीन्स योर हेड नीड्स टू बी एडजस्टेड. और अगर बहुत कोशिशों के बाद भी पानी आपके नॉस्ट्रिल से नहीं आ रहा है, सो एक रीज़न हो सकता है देयर इज़ सम फिजिकल ब्लॉकेज. गो एंड सी योर ENT डॉक्टर. ओके, ज़बरदस्ती नहीं करनी है. जल नीति की 2 प्रोसेसेस होती हैं. फर्स्ट, वॉशिंग द नॉस्ट्रल्स, जो हम पानी के थ्रू करते हैं. एंड सेकेंड स्टेज इज ड्राइंग अप द नॉस्ट्रल्स. दैट इज इक्वली इम्पॉर्टेंट. अगर प्रॉपरली ड्राई नहीं किया तो कोल्ड वाले सिम्टम्स आ जाएंगे. और ड्राई करते समय एक चीज़ का और ध्यान रखना है, बहुत ज़ोर से ब्लो नहीं करते, अदरवाइज़ जो बचा हुआ पानी है वो आपके कानों की तरफ चला जाएगा. बहुत प्रेशर हुआ एयर का तो मे बी
आपके ईयर ड्रम्स कोलैप्स कर जाए। सो ब्लो करते समय भी केयरफुल रहना है। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट नेति। So here is the neti lota. I'll put some water in it. Now I'm adding, see, salt to it, just plain salt. You don't need to take any specific salt or any specific water. Okay, just tap water can do. Now check it on this skin. It is comfortable. Simply bend your body like this. Okay, like this. Fix the spout in one of your nostrils like this. Tilt your head like this and keep breathing through your mouth. See, the water is coming through the other nostril. Simple. This one neti lota. Do not stop breathing. Will work. This neti lota will work as an ENT doctor for you. As I am talking, that's why you can see the flow of water is changing. Otherwise, you should not talk. Simple. Same way you have to do from the other nostril. After doing Jal Niti from both the nostrils, now is the time to drying up the nostrils. For that, just bend forward, face slightly up, and exhale with a jerk. Okay, 20-25 breaths. Then turn your face, close the nostril which is on the lower side. Then other side. If you feel that there is some water still in your nostrils, you can repeat the process. That's it. This is the complete practice of Jal Neti. Very good for your eyes, for your ears, for your nostrils, sinuses, respiratory diseases. Even it helps in some kind of deafness like glue ear. It triggers your optic nerve. So good for your eyes. These are physical benefits. And when it comes to spiritual level, it triggers your Agya Chakra, the third eye. Okay, so this small Neti pot, Neti Lota, is just a miraculous thing. So keep practicing, take care of yourself. Thank you. Hari Om. Yogast Bhava.